हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12 थ्री डायमेंशन पार्ट नंबर 3 स्टडी करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। तो क्लास 12 थ्री डायमेंशन पार्ट नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो यू नो कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. So directed cosine of a line which makes equal angle with x-axis, y-axis and z-axis. So you know well, आप जानते हो कि डायरेक्शन कोसाइन को कैसे नोट करते हैं, एल, एम और एन से। तो चलो चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा क्या मेथड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखोगे डायरेक्शन कोसाइन इज डिनोटेड बाय एल एंड एल इक्वल टू होता है cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ सपोज करो एंगल अल्फा आ गया, राइट। इन द सेम वे एम होता है, एम इक्वल टू आपका फॉर्मूला बनता है व्हाट, cos बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो आप देखोगे कि यहाँ इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो सेम एंगल अल्फा, सो वी कैन राइट दिस आल्सो cos अल्फा। इन द सेम वे इसी तरह से n बराबर आप जानते हो cos गामा, फिर गामा क्या है, एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के साथ ये एंगल है, तो यहाँ हर कोऑर्डिनेट इसका एंगल सेम है, तो यहाँ गामा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अल्फा, तो दैट इज cos अल्फा। सो एल इक्वल टू cos अल्फा, एम इक्वल टू cos अल्फा एंड एन इक्वल टू cos अल्फा। नाउ यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन की रिलेशन क्या है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एल इज गिवन cos अल्फा, सो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा। एम इज गिवन cos बीटा, ये आपका बन जाएगा cos स्क्वायर बीटा। एन इज गिवन cos गामा, तो ये आपका बन जाएगा cos गामा स्क्वायर, cos स्क्वायर गामा equal to 1. So now you know cos square alpha, cos square beta, cos. But here alpha, beta, gamma all are same. So we can write that is cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha equal to 1. So this is what 3 cos square alpha equal to 1. So this is what cos square alpha equal to 1 by 3. So cos alpha equal to what, plus minus 1 by root 3. So आप लिख सकते हो यहाँ L equal to cos alpha and the cos alpha value is what, plus minus 1 upon root 3. इस तरह सेम m इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये भी आप लिख सकते हैं सेम 1 अपॉन रूट 3. अगेन n इक्वल टू cos गामा, इट ऑल्सो इक्वल टू द cos अल्फा, सो प्लस माइनस 1 बाई रूट 3. पता क्या चला कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन which makes equal angle with the coordinate axis what, plus minus 1 by root 3 plus minus 1 by root 3 plus minus 1 by root. These are the in right answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are 3, 5, minus 4, minus 1, 1, 2 and minus 5, minus 5, minus 2. So we have to find direction cosine of the sides of a triangle. So you know any triangle have 3 sides. So we have to find direction cosine of all the 3 sides of a triangle. Let us see. चलो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है। So this is ABC triangle. This is A, this is B, and this is C. So A part is given 3. A part is given 3. Coordinate of A is what? That is coordinate of A is given 3 minus 5 and 3, 5 minus 4. So this is 3, 5 and minus 4. So we will take 3, 5, minus 4. 3, 5 and minus 4. Right? And
B is given what? Minus 1, 1, 2. So this is minus 1, 1 and 2. And C is given minus 5. This is minus 5 and minus 2. Minus 5 and minus 2. Right? So now we have A, B, B, C and C A. So we have to find डायरेक्शन कोसाइन. हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन. तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कई मेथड होते हैं. आप सिंपल सबसे पहले क्या निकालो? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी. सो फर्स्ट यू सी डायरेक्शन ratios of AB. So direction ratio of AB is what? A equal to x2 minus x1. So A and B, so x2 is minus 1 and x1 is 3. So this is minus 1 minus 3, that is minus 4. In the same way, B equal to what? y2 minus y. y2 is 1 and this is minus 4. It is also minus 4. Now C equal to what? 2 minus minus 4. So this is 2 minus of minus 4, that is 6. So these are direction ratio. Now direction cosine. So direction cosine denoted by DCS. So direction cosine denoted by L. So L equal to what? A upon root under A square plus B square plus C square. So A is given minus 4 and this is root under A square, that is what? Minus 4 square. B means minus 4 square. And this is C. C means what? That is 6 square. Okay. So now we can write this minus 4 upon root under 16 plus 16 plus 36. So we can write this as A is given minus 4 and here 16, 16, 30. So 6 3 are 18 and then 3 1 4 5 and 6 68. So this is root under. So you know minus 4 and 68 is what? 17 into 4. So 4 root is 2. So you can write 2 root under 17. So this is 2 2 are 4. So this is finally minus 2 upon root under 17. In the same way, M equal to what? That is B upon root under A square plus B square plus C square. So B is here minus 4. So again this is minus 4 and value of A square, B square, C root over is what? That is 2 root 17. So we can write 2 root 17. So this is 2 2 4. So again answer same minus 2 by root under 17. In the same way n equal to what? C upon root under A square plus B square plus C square. So C is given 6. So this is 6 upon root under. So root 6 upon root under, that is root and 2 root 17. So we can write 2 root 17. So 2 3 are 6. This is what? 3 upon root under 17. In this way, we can find direction cosine of the side AB is what? That is minus 2 by root 17, minus 2 by root 17 and 3 by root 17. In the same way, we can find direction cosine of BC and CA also. So let us see how can we find this. So now, अब देखो direction ratios of BC. So direction ratios of BC is what? Again A equal to. Now we are taking BC. So x2 minus x1 is what? That is minus 5 minus of minus 1. So this is minus 5 plus 1. We will get minus 4. In the same way B. y2 minus y. Minus 5 and 1. So we can write minus 5 minus 1 minus A. Again C, that is z2 minus z1. So this is minus 2 minus 2, that is what? Minus 4, right? Now we have to find direction cosine. So we can write it direction DCS. So direction cosine given by L equal to what? A upon root under A square plus B square plus C square. So A is given minus 4. So this is minus 4 and a square root of minus 4 square
plus minus 6a square plus minus 4a square, right? So you will get minus 4 upon, this is root under 4a square 16, and this is minus a square 36. This is also 16. So we will get what? Minus 4 upon, this is 6 3 ja 18. Carry 1, 2, and 3 to 5, 1, 6, 68. So this is root under 68. You know 68 means 17, 4 ja 68. So you can write 2 root under 17. So this is 2 2 ja 4. So correct answer is minus 2 upon root 17. In the same way, m equal to what? B upon root under a square plus b square plus c square. So b is given what? Minus 6. So this is minus 6, and this is root over 68, that will give 2 root 17. So this is 2 root under 17, 2 3 is 6. So this is what? Minus 3 upon root under 17. In the same way, n equal to what? C upon root under a square plus b square plus c square. So here c is what? Minus 4, and root value is what? 2 root 17. So we can write 2 root 17, 2 2 is 4. This is minus 2 upon root under 17. In this way, we can find direction cosine of the side BC is what? Minus 2 by root 17, minus 3 by root 17, and minus 2 by root 17. In the same way, we can find direction cosine of the side CA. तो चलो देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड CA. तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड CA के लिए भी हमारा सेम मेथड होगा CA. So first to find direction ratios A. So that is CA. So this is x1, y1, z1, x2, y2, z2. You have to find x2 minus x1, that is 3 minus 5. So this is what? 8. In the same way, v equal to y2 minus y1, that is what? 5 minus of minus 5. So this is how much? 10. In the same way, c equal to z2 minus z1. So this is minus 4 and minus of minus 2. So you will get minus 4 plus 4, that is 0, right? Now we can find very easily direction cosine. So L equal to what? A upon root under a square plus b square plus c square. A is given 8, and this is a square root of, that is 8 square. Again this is 10 square, and this is what? 0 square. So we will get 8 upon root under 8 square 64 and 10 square 100, right? So this is a square, b square, c square. So this is 8 square, that is 64, and this is 10 square, that is 100. This is 0. So now we can find easily because there is a CA. So 3 minus 5, 3 plus 5, 8. This is 5 plus 5, 10. Minus 4 plus 2, that is what? Minus 4 plus 2. That is, this is minus 4, and here minus 2. So minus 4 plus 2 is what? Minus 2. So this is minus 2. So here also we will get minus 2. So this is minus 2 square. So this is what? 4. So we will get, so 8 upon, we will get how much? That is 4 plus 4. That is 8. So you can check it, this 3 minus minus 5, that is 3 plus 5, 8. And here 5 plus 5, 10. And here minus 4 and plus 2. So minus 4 plus 2, 2. So 8 square 64, and this is 10. So 10 square 100, this is minus 2, 4. When we add this number, we will get 168. So this is 168. Okay. Now you know 17 4 is 68. So this is 2 root under 17. So 2 4 is 8. So we will get 4 upon root under 17. In the same way, m equal to what? B upon root under a square
plus b square plus c square. So b is given what? 10. So this is 10 and here what? 2 root under 17. So 2 5s are 10. So this is 5 upon root under 17. In the same way, that is n. So n equal to c upon root under a square plus b square plus c square. So c is what? Minus 2. So this is minus 2 divide. It is given 2 root under 17. So this is cancel out. We will get minus 1 upon root under 17. In this way, we can find direction cosine. We can find direction cosine of the line CA is what? That is 4 by root 17, 5 by root 17 and minus 1 by root 17. In this way, we have done two questions in the part 3 and these two questions are very important. These are the basic questions and with the help of this, you can solve lot of questions. So, you have to practice this question. Again, in the part number 4, we will do the next question. पार्ट नंबर 4 में इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे. पार्ट नंबर 3 तक हमने ये दो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थैंक यू.